Namaskar, friends. I'm Professor Preeti Mayani, welcoming all of you on this workshop. We are UGC Human Resource Development Center, Gujarat University, is organizing online workshop on NEP 2020, integration and use of technology. So, friends, I'm welcoming all of you. The Gujarat University was conceived in the 1920s in the minds of public spirited and learned men like Gandhiji, Sardar Patel, Acharya Anand Shankar, B. Dhruva, Dada Sahib Malvankar, Kasturbai Lalbai, and many others. However, the university could come into existence only after the achievement of independence in 1949. The university was incorporated under the Gujarat University Act of the state governments as a teaching and affiliating university. This was done as a measure of decentralization and reorganization of university education in the then province of Bombay. The Gujarat University is the largest university in the state, catering to the needs of higher education of more than 2 lakh students scattered over so many colleges, recognized institutions, and approved institutions. We are running so many postgraduate university departments and PG centers. Gujarat University has developed phenomenally in the last 67 years to be recognized as a premier university in the country today. It provides education in one of the widest range of disciplines to about 2 lakh students. Under the guidance and the leadership of our respected Vice Chancellor, Honorable Professor Himanshu Pandyaji, and Registrar PM Patel, sir. Gujarat University ranked first in Gujarat, uh, and the HRDC of Gujarat University is one of the oldest HRDC of India. It was known as Academic Staff College earlier. It was established in 1987. We are ranked 16 among 66 HRDCs of India by NEC. We are the first in Gujarat. We have organized more than 700 professional development programs, including Guru Dakshata, faculty induction program, faculty development program, orientation program, refresher courses, short-term courses, winter school, summer school, seminar, workshops, symposia, PhD coursework, etc. We have imparted training to more than 20,000 research scholars, academicians, and administrators working in college and universities of India. UGC HRDC has been the pioneer, created history and benchmarks by organizing the so many courses under the able leadership of our respected director, Professor Dr. Jagdish Joshi ji, and the entire team of HRDC Gujarat University. So, friends, today we have our eminent personality, eminent speaker, Dr. Rakesh Damir ji. Sir, I am welcoming you on behalf of HRDC Gujarat University. Thank you, madam. Damerji Thanks a lot. has teaching English at UGC PG level since last 25 years at Gujarat University's affiliated colleges. MPhil and PhD guide since last 10 years at Gujarat University. Teachers trainer at Gujarat University Academic Staff College since last 10 years, and he is a very good friend of HRDC Gujarat University. Sir, I am requesting you Thank, for your thanks a lot. knowledge sharing. Yeah, I'm privileged and I'm obliged for the same. thank you, sir. Yes. Yeah. Yeah, please go on, please. Yeah. Thank you very much. And definitely I'm looking forward to have a lecture.
I'll be having a 2 hour sessions, and definitely I'm going to enjoy, and I hope that that my friends are going to enjoy for the same. And that is the thing what I'm looking forward to. Yeah, shall I start? Yes, sir. Yes, sir. Uh, okay. So, as far as my lecture is concerned, uh, it is related to technology. And when I talk about the technology, then we are using the technology in different sphere. I'll be using two languages, English and Hindi, as it's a national program as such. So I'll be using two languages. So when I talk about the technology, then technology gives us a lot of leverage. It gives us a lot of power. But we've seen that that in industries, in medical, in entertainment, and in aviation, wherever you go, you will be finding that that technology is using in galore. It is used very much. But of course, when it comes to education, we are definitely on the receiving end, and we have to see that that the applications on iOS, on Android, Google Play, we have to use to the optimum, because there are more than 3 million applications on Android, and there are 3.5 million applications on iOS, Apple. So no, if we use the technology for our point, for our benefit, for the students benefit, for the community benefit, it is definitely going to facilitate, it is going to help by leaps and bounds. There is no question about it. And as I told that that education requires a lot of expertise. Education requires a lot of technological people, where they can assist and facilitate to the community at large. And this is the thing that that what I have been working on since last 10 years. And of course, my PhD topic is using technology in English language, how to develop English language through technology. That is the thing that is my PhD topic. And of course, I've incorporated the technology, lot of application, lot of device, lot of softwares, lot of links, lot of web quest, also the thing that that I use tremendously. And it has given me a lot of empowerment. And I want that that this type of empowerment we are going to definitely have an access to. Now, coming to my lecture, uh, uh, first of all, I will be using some quotes related to technology, because there are some powerful quotes which which it can inspire us and can motivate us. And of course, inspiration and motivation is our food thought. And of course, these are the quotes, and these are topics which I have taken in my lectures, and these are the topics which are the powerful quotes for the 21st generation. And of course, my two things that that in my lecture I will be emphasizing again and again. Number one is uh, artificial intelligence, and number two is voice assistance. These are the two things that that again and again I will be using, because our technology, the platform or the background of the technology is based on that as such. So of course, that I'll be giving you few quotes and few expertise in technological field, who have given a lot of contribution. They have given the best of contribution, and as far as this contribution is concerned, how we can get an advantage to, how we are going to get benefited. That is the thing that what we are going to learn. Now, good, bad, or indifferent, if you are not investing in new technology, you are going to left behind. As far as technology is concerned, you cannot have the blind eye. The present generation, if they are not going to use the technology in the classroom, they are not going to use the whiteboard, they are not going to use the projectors, they are not going to use the latest mobile phones, smartphones, latest iPads, little pads, or a lot of webquest and lot of software, if they are not going to use, I think so that that they will not be able to do the justification. If you want to do the justification, then definitely the resources have to be used. And I will be going to talk about a lot of resources. And in this platform, I'm going to give my presentations,
I'm going to give you a lot of applications. I'm going to give you a lot of web quest sort of things as such. I will be going to give you a lot of hardware things which will be assisting and facilitating for the classroom learning and teaching, specifically mirroring sort of things as such. Because if you have a projector or if you're having a TV in the classroom, and if you are using it properly for mirroring from the student's point of view, then you are going to make your lecture interesting. Because the web 2 technology is related to collaboration, creativity, and connectivity. These are the three things sharing. These are the three things that that what we are looking forward to. Gone are the days that that we were talking and talking and talking in the class, but presently you have the visual literacy, you have the latest images, you have the audios, you have the multimedias, and you have numbers of things as such. So now how you are absolutely going to justify those things in the classroom? Otherwise, what will happen that that we have seen that that the numbers of students in the classroom have been dwindled, and online teaching is flourishing for the simple reason that that the use of multimedia is in access. And today I am going to talk about that multimedia, which is definitely going to facilitate to the teachers fraternity. And this is the thing that what I'm looking forward to. Everybody has to be able to participate in a future that they want to live for. That's what technology. As far as the things are concerned, we are using the technology of 18th century, 19th century. And what are they? Blackboards, classrooms, okay, talking, conversation, blah blah blah, teachers talking time, what we call it as such, TTT. The teachers talking time has to be reduced, and what has to be emphasized upon, the things which have to be emphasized upon is flip lectures. As I told before, that the multimedia, the images, that is the thing that that. And we are having a number of resources, but the only thing is that that understanding those resources, usage of resources, that's a very important part. And of course, the Skillshare, the YouTube, the slide share, all these applications gives you the facilitation, support, and understanding of use of the technology. And this is the thing that that what absolutely I'm going to talk today related to that as such. Okay, the technology you use impress no one, the experience you create with it is everything. When we talk about that, that technology is not only for the impression point of view, but it has to be for the utility point of view. Utilitarian aspect is a very important part. And when we talk about the utilitarian aspect, tomorrow our students are going to go for the jobs. Okay, so when they will be going for the jobs, it is not only the degrees which are going to help them, but with the degrees, the know-how, the skills, these are the important things. And in our universities, what happened that after graduation or post graduation, our students are going from pillar to post to get the jobs. And definitely they are not getting the jobs, and if they are getting the jobs, they are not getting the jobs as they ought to have as such. This is the reason that that use of technology in their classroom to have the latest thing from the demand of the society, from the demand of employment, that's an important part as such. When we are using the technology, usage of technology is such that tomorrow you go for the jobs, that job should facilitate whatever the understanding, whatever the know-how, whatever the technology you have used in your undergraduate and postgraduate level. Just mere degree with 60%, 70% will not facilitate, but the pragmatic and practical knowledge through technology is definitely going to help them. And it comes from the teachers. First of all, the teachers, professors, and the stakeholders in the classroom have to use. And when they are using this technology, then only then it is going to percolate, it is going to get down. So important thing is that that first of all the teachers have to use the technology. And I know that the teacher are getting ample of time. So in ample of time, they can have an access to the technology from the classroom teaching. Those resources are going to help them a lot. There is no question about it. Teachers need to integrate technology seamlessly into the curriculum instead of viewing it as an add-on, an afterthought, or an event. When we talk about the smartphones, the phones are smart, but we have to see that that the people should be smart, our teachers should be smart, our students should be smart. That we know that that the lot of application apps are smart. Our mobile phones are having the latest technology, but that is the reason that we call it as a smartphone.
But unless we become smart and we use the technology for our own purpose, for our own education, for our own curriculum, for our own student, then only then, the smartphones can become the smart in a real sense. Otherwise, it will be the phones which will be smart. But as far as we people are concerned, we people will if we are not smart, then the things are not going to get facilitated. Synergy and integration of the people and technology has to be done. And the technology should not be in theory. As the Chinese proverb goes, tell me and I'll forget. Show me and I remember. Involve me and I understand. Unless the involvement is there, the understanding will not take place. Otherwise, you have a numbers of YouTube videos, you have numbers of theories, but unless you implement those theories, you are not going to have the access to the latest technology for the classroom usage and the community at large. This is one of the things that, what you should have your own folders, and in your folders, you should have the applications related to artificial intelligence, voice assistant, note taking, speech to text, text to speech, okay, then presentation apps, numbers of folders which will facilitate in your classroom. And that is the thing that that I will be going to talk in my next sessions as such. Okay, then uh, play is the highest form of research. When we talk about the play, technology is the play, and unless we integrate, it is not going to become the research work when you are not involving yourself in a research project. And the best example what we can see is among the children's. The children, they are involving in video games. We don't have any guide of video game. No one is supporting them, no one is teaching them video games, but they become the master of video games. And they they master one session, they master one degree, then they come to second, then they come to next degree, then they come, and they are masters of the video games, of the latest technological video games what I have seen as such. And my nephew, 4 hours 5 hours is daily having an access to video games, and his mind has become very sharp in the video games. But coming to the education point, education part, education domain, it is very important thing is that that if we use the technology day in and day out, then we will be definitely justifying our students in the classroom, and we will be justifying our own self as such. The role of the teacher is to make the lectures interesting, exciting, sharing, communicating, contributing, collaborating, creative. These are all the things that that what the teachers are always looking forward to. And if we are making our things interesting and exciting, then we are absolutely enjoying with the student. If suppose you just speak in the class for 1 hour, but you don't show the images, you don't show the animations, you don't show the latest resolution photographs, if you don't show them the graphs, if you don't show them the videos, then of course your lectures will become inadequate, your lecture will become incomplete. So in my opinion, I definitely consider that that consideration of all the resources is a very important part of having an access to the language. Now, it has been said that that technology will replace teachers. Technology will never replace teacher. But if teachers who know how to use technology effectively to help the student connect and collaborate together online will replace those who do not. In a sense, the teachers who do not use the technology will be replaced by the teachers who use the technology. A very simple thing. In the coming days, we are living in a competitive world. And in competition, always the use of the latest thing, the use of the technology, the use of the expert resources, these are a very important factor. And we have seen that that the teachers with the technology are paid in excess than comparison to the teachers who do not use the technology. And specifically, I'm talking from the private sector point of view. From the government sector point of view, the incorporation of technology is not so high as we have seen in the private sector. And nowadays, the government jobs have been restrained. It has been restricted. So the posterity or the coming generation have to go for the, of course, for the private jobs. And when they don't use the technology, then they will not be getting an appropriate slot.
They will not be going to get the jobs according to their own ways and means as such. We want students to control their devices rather than being controlled by the devices. Now, this is the thing that, what we call it as a digital detox. What is digital detox? That we have seen that, I told about my niece that, he's playing daily 4 hours to 5 hours video game. Now, this is that devices are controlling the person rather than the person controlling the device. So in my opinion, that, that you have to control your own application. You should have your own stuff. You should have your own folder, and you have to work according to the classroom necessity, the student's necessity. And you have to have some 40 to 50 application, and today I'm going to give you the name of this application, which is definitely going to facilitate in your classroom teaching, no question about it. But WhatsApp and Facebook and Instagram and numbers of application which are redundant, which are obsolete, which does not help much. They are for the entertainment purpose. But in education, you should be focused, or you should be confined to. But we have seen that that as the present generation, they go for the junk food. These are the junk applications. These are the junk stuff. These are the junk resources which pollute the mind. And it takes a lot of time where you could have worked for your own resources. So in my opinion, the students should be the devices should be controlled by the teachers. The devices should be controlled by the student. And the student should be mentored by their parents and teachers, because the student do not have the maturity. They do not have that IQ, that that how to use the devices. So here it is the responsibility of the peer students. It is the responsibility of the teachers, and it is absolutely the responsibility of the parents to see that that their devices are controlled by their wards or by the student. We have seen that that what happens, that the parents do not give the mobile phone or iPad to the students at all, to their wards at all. Now what happens, that that we are throwing the baby with the tub water. So it is important thing that the mobile phone should be given, the tablet should be given, but the monitoring part should be taking place. And if you have that monitoring part, and the parents and teachers should know that which are the best application for the wards or for the student, so they have to see that that they are using that thing or not. That is an important part. And if they have an access to that, then only then we can have the channelization of our education. The real revolution or the real understanding of our stuff can have only that. When we unleash the creativity in a student, we are training them to change the world. Nowadays, formerly, it were the teachers, it were the parents. But nowadays, the blending with the parents, with the technology, the blending with the parents plus teachers plus peer learning plus technology. These are the blendings which in 21st century has taken place. Formerly, it was just the guru, 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 and guru. And at some extent, you had the parents. But nowadays, I just make the addition of 4 things: that parents, teachers, peer learning, and technology. And technology is numero uno. It is number 1. We should know that which are the application best for our syllabus, which are the best application best for our curriculum. As I said before, that that there are more than 35 lakhs application on Android and 30 lakhs application on iOS. So you are going to have an access to whatever the things you want to do. For example, I'm teaching International English Language Testing System, IELTS. So my work has been decimated. It has come to 1/10, because my work is my speaking part and listening part and reading part and writing part has been done by maximum by the technology. It is there that I'm giving the tips to them as such. So what happened, that that the autonomous learning takes place. Okay, learning management system, as we call it as an LMS. Okay, so that autonomous learning or learning management system takes place. What we call it is the zone of proximal development, or the scaffolding in technology. Scaffolding means support, that you get the support of the technology, and when you master your thing, then you are not getting then you don't have to use the technology. For example, I'm teaching my students the conversational English. So conversational English, my students are doing a lot of practice with the technology. They're doing a recording. Their pronunciation is improved. Their fluency is improved.
When all those things improves, then that my work is hard, my work is decimated, and the learning process becomes fast from the student point of view. So of course that if suppose in 21st century we have to make our students smarter, if we want to give them the best employment, if they have to get the know-how, then of course the use of the best technology from the world is definitely going to facilitate them. There is no two opinion about it. Formerly it was only the classroom teacher, but presently the world has come in the classroom. Your Google has come in the classroom. Your internet IoT things has come. IoT, what we call it, it has come. The big data has come in the classroom. The blockchaining has come into the classroom. The applications have come into the classroom. The web questing has come into the classroom. And whatever the teachers they are teaching, they can definitely get a lot of resources from the internet of things to master their learning as such. So it is very important thing that students should know that which are the best resources for them to learn the stuff, and the teacher should know that that which is the best resources for them to give them, so they can master their product or master their stuff as such. Then nowadays that as far as the teacher's coach is concerned, it was formerly it was coming in the classroom and giving the lecture for 1 hour and giving 3 lectures or 4 lectures in a day. But presently supporting learning with technology and education to make the meaningful connections. In India that we are definitely we are proceeding, but in abroad it is BOYD. What is BOYD? Bring BYOD. BYOD means bring your own devices in the classroom, and whatever the things are concerned, you have those things in access, and where you have the difficulty, you ask the teacher. And the lessons are given in the form of videos. What we call it is a flipped lectures. Flipped lectures means that that in the at the home they have to prepare the lectures, they have to watch the videos, they have to go through the lectures, and they until they understand, they are going to the lectures again and again, and when in the classroom they come, whatever the difficulties they have found in the videos, they are going to ask into with the peer learning or from the teacher's point of view. So what happens that in the classroom the interactive sessions takes place, and the mastering of the stuff becomes easy, because whatever the teacher is speaking for 1 hour, they have already sent the videos, and the students are watching videos, and at their own leisure, with their own pleasure, and they can watch the videos again and again, because lecture is only for the one time. But as far as the videos watching at home is concerned, you can have number of times, and as far as those videos are concerned, it can be helping at the examination point, examination time also. So of course that flipped learning or the teachers coaching, the aspect of teachers coaching has been a paradigm shift, 360-degree. It is of course helping the student from giving the best resources and the finding of the resources and going through the resources. That is an important part from the teacher's point of view as such. So of course it's not what tool you use, it's how and why you are using. Be intentional, be specific, and be divergent. We are using number of tools, okay? And what happens that many a time we think that that after using the tool, we think that that it's a waste of time. So you have to have you have to focus your own tools, okay? And if you know that these are the best tools, and these are the best tools from the syllabus and curriculum point of view, it is definitely going to help them. Otherwise what will happen? It will be the cognitive dissonance. Cognitive dissonance means that you have numbers of things on the web, numbers of things on the Play Store, numbers of things on the Internet of Things. These are the cognitive things, what we call it as. And dissonance means that that you are confused. So what happens that that it is here the role of mentor, here the role of teachers and parents comes. That that these are the because whenever we are preparing from the applications or web testing or from Internet of Things, we have to see from the curriculum point of view or from the syllabus point of view. We have to prepare our lessons, because if that thing is not going to happen, then there will be a lot of diffusion,
diversion and bifurcations. And these are the things that that what a lot of stress or lot of cognitive dissonance is going to bring in the mind of the students. So we have to see that that our students are not confused, and here the responsibility of the teacher to collect the stuff and to blend them, to make them for the lecture point of view and to make them from the student point of view. This is the responsibility from the teacher's point of view. Task before downloading the apps. Think about the learning you want to accomplishing before looking for tools to get here. Now here, as I told before, that that before downloading an app, it is a very important part that that which are the applications which is best for your topics, for your syllabus, for your curriculum. That is the thing that that what we are looking forward to. Now I'm coming to my application part here. This was my more or less a theory part. Now I am coming from the application, which are the best application. And if you have the, my friends, if you have the pen and paper, then you write down all this application and what are the usage of this application. That is definitely going to help. I'm going to talk about some SlideShare application. I'm going to talk something about Keynote application. I'm to talk about the note-taking application. I'm going to talk about the presentation application. I'm going to talk about the teleprompter application. I'm going to talk about the mind mapping application. I'm going to talk about the image search application. I'm going to talk about the curation application. I'm going to talk about the speech to text and text to speech application. There are numbers. There are hundreds of applications, but I will be going to take, as we have just 1.5 hours now. So I will be just confining myself for the application which can be helpful from the classroom point of view and from your own lectures preparation point of view, and it will facilitate for your online and offline lecture taking process as such. Okay. Now, as I told, as my last point was there, that that which are the best application, because if you open the application, you will just get mad कि कौन सी application करनी है, कौन सी नहीं करनी है, because there is in the jungle, how numbers of trees in your Play Store and in your App Store, you will be having number of applications and you are going to get bamboozled, you are going to get confounded. So today I will be having few applications which I am using in my classroom, which I am using for myself, which I am using for the stakeholders, for I am using for the teachers fraternity, and these are the applications which I am going to share presently as such. Okay. Now, how I have got this application? First of all, I myself was confounded. मैं खुद भी बहुत असमंजस में पड़ गया था कि भी कौन सी इतनी सारी एप्लीकेशंस है, पेड एप्लीकेशंस है, ओपन रिसोर्स एप्लीकेशन है, क्लोज रिसोर्स एप्लीकेशन है. सो नो आई माइसेल्फ वाज थिंकिंग कि मुझे कौन सी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, क्योंकि मैंने पहले बहुत सारी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद मुझे भी ऐसा लग रहा था, आई वाज आल्सो रिग्रेटिंग दैट कि इसमें मेरा बहुत टाइम गया और इसमें मेरा बहुत दिमाग गया, और पेड एप्लीकेशन में मुझे वो एप्लीकेशन भी वापस से मुझे उसको कैंसिल करनी पड़ी है मुझे. तो मैं आज आपके सामने कुछ, today I'm going to have some of the application which is definitely going to help by leaps and bounds, which is definitely going to facilitate you, which will scaffold you, and which will help you as a zone of proximal development for the learning process, which is a very important part. Now ये जो मेरी application है, ये जैसे मैं जो एक व्यक्ति है जेन हार्ट करके, जेन हार्ट जो है, she is the founder of the Center for Learning and Performance Technology. And she is an independent work learning advisor who currently focuses on helping learning in order to create more relevant training initiatives for today's employees, as well as work with managers to support continuous learning in their teams. 2007 से, since 2007, ये अपना एक सर्वे करवाती है, और वो सर्वे करवाने के बाद वो 2000 एक्सपर्ट का पूरी दुनिया के अंदर सर्वे करवाती है. और इनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो 3 कैटेगरीज में होती है. एक प्रोफेशनल लर्निंग में होती है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लर्निंग में, दूसरी वर्क प्लेस लर्निंग में होती है, और तीसरी एजुकेशनल लर्निंग में होती है. सो नाउ आई विल नॉट बी गोइंग टू टॉक अबाउट मच अबाउट द प्रोफेशनल एंड पर्सनल लर्निंग, और आई विल नॉट बी टॉकिंग मच अबाउट द वर्क प्लेस लर्निंग,
but I will absolutely be giving a lot of application related to the educational learning. और एजुकेशनल लर्निंग के अंदर बहुत सारे ऐसे एप्स हैं जो आप है ना बहुत ज्यादा लेबर करते हैं या मजदूरी करते हैं, जिसको कहते हैं कि मजदूरी करते हैं, तो आपकी मजदूरी, आपका लेबर है ना, दैट इज गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड। और आपका काम है ना, आपका इमेज, आपके अच्छे से आपका काम होगा, फास्ट काम होगा। और क्लासरूम में मेरी जो सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी आप क्लासरूम के अंदर लेक्चर्स लेते हैं या जब बातचीत करते हैं, तो अपने लेक्चर्स को मिररिंग करिए आपके। और मिररिंग क्या होता है, आपके आपके अगर क्लासरूम के अंदर प्रोजेक्टर है तो ठीक है, अगर प्रोजेक्टर नहीं है तो आप टीवी पे मिररिंग करिए, आप वॉल पे मिररिंग करिए। तो वो मिररिंग करने से जो भी आपका काम होता है वो सामने डिस्प्ले होता है। और वो जो काम सामने डिस्प्ले होता है तो उसमें आपको भी आनंद आता है, यू आर ऑल्सो एंजॉइंग द थिंग एंड योर स्टूडेंट्स आर ऑल्सो एंजॉइंग द थिंग्स एज सच। So in my opinion, that whatever the applications I'm going to talk about through the Jane Heart, it is definitely going to help you for preparing your own folders, for preparing your own notes, for preparing your own homework. Because whenever we ask the student to do the homework, the teachers themselves have to do the homework. And जैसे मैंने ये जेन हार्ट के बारे में कहा कि उनकी उनकी लिस्ट है जो हर साल के अक्टूबर में बाहर आती है। और उसकी 150 एप्लीकेशन की जो लिस्ट होती है वो प्रोफेशनल लर्निंग की होती है, 150 एप्लीकेशन की जो लिस्ट होती है वो उसकी वर्क प्लेस लर्निंग की होती है, और 150 एप्लीकेशन की जो लिस्ट होती है वो उसकी एजुकेशनल लर्निंग के लिए होती है। तो जो ये लिस्ट होती है, ये कहाँ से, इसका सर्वे होता है, इसका वोटिंग होता है। और वोटिंग 2000 पूरे दुनिया के अंदर 2000 पीपल गिव द 2000 एक्सपर्ट्स गिव द वोट फॉर द एप्लीकेशन, कि ये नंबर 1 एप्लीकेशन है, ये नंबर 2 एप्लीकेशन है, ये नंबर 3 एप्लीकेशन है। वर्क प्लेस के लिए अलग है, प्रोफेशनल के लिए अलग है, और एजुकेशनल के लिए अलग। और आज जो है मैं एजुकेशनल के लिए कुछ एक एप्लीकेशन आपको मैं बताऊंगा, और जो मैं खुद क्लासरूम में यूज करता हूँ, क्योंकि ये यहाँ 150 एप्लीकेशन है, तो मैं आपको सारी 150 की 150 एप्लीकेशन मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको खाली 10 या 15 एप्लीकेशन जो इसकी है वो बताऊंगा। और जो 150 में से मैं खुद यूज करता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा, और वो उसके एप्लीकेशंस के मैं आपको नाम भी दूंगा, और एप्लीकेशंस के मैं आपको इमेजेस भी दूंगा, एप्लीकेशंस के मैं आपको प्रेजेंटेशंस भी दूंगा मैं आपको, और एप्लीकेशंस के मैं आपको लिंक भी दूंगा। ये सारी चीजें यू गो टू द गूगल एंड यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द रिसोर्स दैट दैट व्हाट यू आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट एज सच। ओके, सो जो उनकी एप्लीकेशन है, आई एम कमिंग टू द एप्लीकेशन डायरेक्टली। Okay. Okay. Now I'm coming to the application as far as the list are concerned. बुक मार्किंग के लिए उनकी एक एप्लीकेशन है DIIGO, बुक मार्किंग। बुक मार्किंग मतलब मुझे ये जो इमेजेस हैं, ये इमेजेस मुझे इसको भविष्य में जरूर पड़ेगी, लेकिन मुझे इसको सेव करके रखना है। ये टेक्स्ट है जो मुझे भविष्य में जरूर पड़ेगी, तो मुझे इसको अभी सेव करके रखना है। ये वीडियोस है, ये एनिमेशंस हैं, ये चार्ट्स हैं, ये मुझे आज मैं देख रहा हूँ गूगल में। But we should have the habit of bookmarking the application so that we can use for the future use. You can be using for your doctorate, you can be using for your lectures, you can be using for your writing an article. तो हम लोग क्या होता है कि हम लोगों की एक बुक मार्किंग ऐप के अंदर सारा का सारा रिसोर्सेज का वेबसाइट जो कलेक्शन है, वो कलेक्शन जो आर्काइव जिसको बोलते हैं, वो आर्काइव्स को हमको इकट्ठा करना और भविष्य में हम उसको यूज कर सकें। दैट इज द थिंग व्हाट वी आर यूजिंग। अगेन आई विल यूज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन, दैट इज DIIGO, एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन योर एप्पल स्टोर। ओके, और इसको अगर सपोज आप ये बोलोगे इसको मुझे यूज कैसे करना है, तो मैं आपको दो तरह से मैं इसको यूज करने के लिए बताऊंगा। वन इज यू कैन यूज इन द स्लाइड शेयर। स्लाइड शेयर में प्रेजेंटेशन होते हैं। स्लाइड शेयर के अंदर देयर आर मोर देन 20 मिलियन प्रेजेंटेशंस, बराबर है। वो प्रेजेंटेशन आपको कोई भी सब्जेक्ट में, जैसे मुझे अगर ग्रामर पढ़ाना है तो ग्रामर में मुझे टेंसेस पढ़ाना है, तो टेंसेस के अंदर मुझे अगर प्रेजेंटेशन चाहिए तो आई गो देयर, आई सेव देयर, आई शेयर विद द स्टूडेंट एंड आई कैन शो इन द क्लासरूम। तो सबसे पहले तो आपको क्या है कि आपके स्लाइड शेयर की आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, और स्लाइड शेयर की एप्लीकेशंस के अंदर यू आर गोइंग टू गेट नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन फॉर पर्टिकुलर टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक टॉपिक लेना है, जैसे सपोज टीचिंग इंग्लिश इन 21st सेंचुरी और द लेटेस्ट ट्रेंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग।
तो जस्ट मैं अगर स्लाइड शेयर में अगर टॉपिक डालता हूं मैं अगर सपोज, तो आई विल बी गोइंग टू गेट हंड्रेड्स ऑफ प्रेजेंटेशन रिलेटेड टू दैट, और वो प्रेजेंटेशन में देखने के बाद मुझे जो भी स्लाइड्स चाहिए उसका मैं स्क्रीनशॉट लेके मैं अपना खुद का फोल्डर बना सकता हूँ। और आपको ये जितनी भी एप्लीकेशंस के बारे में मैं आपको अभी मैं बता रहा हूँ, you go into SlideShare, you write down the name of the topic, and after writing down the name of the topic you are going to get number of presentation, और वो presentation देख के वो applications के बारे में you can master it out ऐसा। और दूसरी चीज ये है कि अगर suppose you don't want to go through the SlideShare, then in the YouTube just write down DIIGO tutorial and you are going to get numbers of videos related to that। और वो वीडियोस को आप सेव कर सकते हैं क्या, और वो वीडियोस का जो सेव करने के लिए मैं आपको एक और एप्लीकेशन का नाम देता हूं, वीडियो सेवर। ओके, आप यू गो इनटू योर गूगल स्टोर, आप गूगल स्टोर के अंदर वीडियो सेवर में जाइए और वीडियो सेवर में जाके आप कोई भी टॉपिक का नाम लिखिए, टॉपिक का नाम लिखेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट नंबर्स ऑफ वीडियोस रिलेटेड टू दैट। हम लोग यूट्यूब में भी देख सकते हैं, लेकिन यूट्यूब के अंदर you don't have the saving facility। अगर saving facility है तो then you have to pay for that as such। लेकिन आपको अगर सपोज फ्री ऑफ कॉस्ट अगर सपोज गूगल प्ले के अंदर आपको जाके अगर सपोज रिकॉर्डिंग अगर सपोज रिकॉर्डिंग सेव करनी है तो वीडियो सेवर के अंदर यू आर गोइंग टू गेट नंबर ऑफ एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन दैट। और मैं आपको अभी जितनी भी एप्लीकेशंस के बारे में मैं बता रहा हूँ, आपको सिर्फ एक ही वर्ड लिखना है, एप्लीकेशन का नाम लिखना है और सामने ट्यूटोरियल डालना है। एप्लीकेशन का नाम लिखना है और ट्यूटोरियल डाल, तो एप्लीकेशन के नाम के बाद ट्यूटोरियल होगा, तो जितनी भी मैं एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, व्हाटएवर द एप्लीकेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, यू आर गोइंग टू गेट नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ वीडियोस एंड नंबर ऑफ रिसोर्सेज रिलेटेड टू दैट। और अगर आपको सपोज इससे भी रिलेटेड अगर सपोज मैं कोई एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं, जैसे मैं डिगो की बात की, DIIGO, या मैंने अगर सपोज आपको स्लाइड शेयर की बात की, तो यू वांट टू हैव द एक्सेस टू नंबर ऑफ इमेजेस टू दैट। तो इसके लिए एक एप्लीकेशन है जिसको हम लोग इमेज सर्च के एप्लीकेशन कहते हैं, बराबर है। इमेज सर्च अगेन इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन योर गूगल प्ले। आप खाली इमेज सर्च में जाइए और इमेज सर्च के अंदर आप DIIGO आप या स्लाइड शेयर आप वो अगर सपोज टाइटल डालिए, you are going to get numbers of images related to that, and you can slideshow, you can play, you can take a screenshot, and you can do a number of permutation and combination or related to that। और ऐसा नहीं है कि जो मैं एप्लीकेशन दे रहा हूं मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, बट यू नो whatever the subject, whatever the topics you are teaching, वो टॉपिक का अगर सपोज आप नाम डाल रहे, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अगर सपोज एक टॉपिक है कि जैसे प्रोनाउंसिएशन एक टॉपिक है या कम्युनिकेशन स्किल्स एक टॉपिक है, तो मैं इमेज सर्च में गया और इमेज सर्च में मैंने सिर्फ इतना लिखा कम्युनिकेशन स्किल्स, सो आई विल बी गोइंग टू गेट मोर देन 500 इमेजेस रिलेटेड टू दैट। और वो इमेजेस के अंदर मुझे जो भी अगर सपोज मुझे अगर उसका स्क्रीनशॉट लेना है या मुझे उसका फोल्डर बनाना है या मुझे अगर उसका स्लाइड शो में करना है तो आई कैन डू इट आउट। ये आपको इमेजेस आपको गूगल में भी मिलेंगे, लेकिन गूगल के अंदर क्या होता है, हर चीज का आप हर इमेज को आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो, और उनकी इमेजेस की मर्यादा है, दे आर द कन्फाइनमेंट, दे आर द लिमिटेशन टू दैट इमेज। लेकिन अगर आप सपोज पिक्ट्रो, PICTROV, पिक्ट्रो एक एप्लीकेशन का नाम है, ठीक है, इमेज सर्च या पिक्ट्रो अगेन इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, या आप इमेज सर्च में डालिए या पिक्ट्रो में, जस्ट पुट डाउन द नेम ऑफ द टॉपिक and you are going to get the number of images related to that। दो चीजें वापस से मैं बताऊंगा आपको, तीन चीजें। अगर आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड अगर वीडियोस चाहिए तो ट्यूटोरियल डालिए, अगर आपको प्रेजेंटेशन चाहिए आपको टॉपिक से रिलेटेड, मैं बता रहा हूं ये अगेन यू मे बी राइटिंग, देन गो फॉर द स्लाइड शेयर। एंड इफ यू वांट टू हैव द नंबर ऑफ इमेजेस, either you go for the Pictro, PICTROVE, and image search, that is the application which you are going। और ये जो है again this has come from Jane Hart's जो एजुकेशनल से रिलेटेड उनकी लिस्ट है 150। आप what you have to do is आप खाली जेन हार्ट एजुकेशनल 150 एप्स लिखिए, you are going to get the list related to that as such। और वो लिस्ट से you can उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी है कि ये एप्लीकेशन किस काम की है, नोट टेकिंग से रिलेटेड है, टेलीप्रॉम्प्टर से रिलेटेड है, माइंड मैपिंग से रिलेटेड है, इमेज सर्च से रिलेटेड है, ठीक है। आपको जो भी टॉपिक चाहिए वो टॉपिक से रिलेटेड यू आर गोइंग टू गेट इट आउट एज सच। ओके, देन
Second application what I want to deal is a Quizlet. ये Quizlet application क्या है? Quizlet application जैसे सपोज आप क्लासरूम में कोई टॉपिक ले रहे हैं, जैसे मैं एक ले रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, तो एडजेक्टिव से रिलेटेड मुझे क्विज बनानी है अगर सपोज क्या, तो वो क्विज के अंदर मैं खाली अगर एडजेक्टिव डालूंगा ना, तो आई कैन बी हैविंग अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस विद द आंसर्स रिलेटेड टू एडजेक्टिव्स. और ये तो मैंने खाली एडजेक्टिव की बात की, बट अगेन देयर आर मोर देन 2 lakhs quiz and the answer with the quiz, so that you know that when you have to take in the classroom, it is definitely going to have your questions and answers, and that is the thing that you know that it is definitely going to help them out as such. फिर बाद में है Vimeo. Again, Vimeo is an application. जैसे हम लोग YouTube की बात करते हैं, तो YouTube क्या हो गया, एक जनरल हो गया, और जनरल के अंदर क्या होता है कि यू आर गोइंग टू गेट अ नंबर ऑफ वीडियोस एंड यू आर लॉस्ट इन दैट थिंग. अब ये जो Vimeo है, दिस इज स्पेसिफिकली इसमें दो एप्लीकेशन है, वन इज Vimeo एंड सेकंड इज टीचर्स ट्यूब. ठीक है, ये जो एप्लीकेशंस हैं ये आपको क्वालिटी वीडियोस रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट्स देते हैं, और इसके जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, यू आर गोइंग टू गेट नंबर्स ऑफ वीडियोस रिलेटेड टू दैट एसेट. और इसका जो वीडियो का ड्यूरेशन है ये भी थोड़ा ज्यादा होता है, और इसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती है. तो अगेन आई विल बी यूजिंग 3 applications for having the videos related to your subject. One is YouTube, you know it, I don't have to name it. Then second is Vimeo, 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 okay, and third is teachers tube. बराबर है. अब क्या होता है कि हम लोग क्लासरूम में जाते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं कि बोले बच्चों को YouTube के बारे में जो मैं वीडियो बता रहे तो वो तो बच्चों को पता ही होगा. Then you have the second option, and the second option is that you know that you go to the Vimeo and teachers tube, where the students are not much aware about this platform. तो इसमें क्या होगा कि आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे which can be facilitating for your lectures part as such. यहाँ टेक्नोलॉजी काम आती है, और जो टेक्नोलॉजी, जो इस तरह के टेक्नोलॉजी हम सोचें कि हमको what we want from the resources, then you can have an best of resources for your classroom teaching, which will make your things very easy. Then next application is OneNote. Okay, ये Microsoft का एक एप्लीकेशन है, और OneNote एप्लीकेशन इज व्हाट, इट इज रिलेटेड टू नोट टेकिंग. और नोट टेकिंग के अंदर OneNote के अंदर क्या है कि जैसे हम लोग क्लासरूम के अंदर जाते हैं तो हम लोग फॉर एग्जांपल मैं एक टॉपिक दूंगा, टुडे आई विल बी टॉकिंग समथिंग रिलेटेड टू पार्ट्स ऑफ स्पीच और फिगर्स ऑफ स्पीच, तो मैं फिगर्स ऑफ स्पीच बोर्ड पे लिखूंगा. ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है, आपको एवरीथिंग इन वन एप्लीकेशन यू विल बी हैविंग एन एक्सेस टू. आपके टेक्स्ट पूरा अंदर आ जाएगा, जस्ट टू प्रेस इट एंड द टेक्स्ट विल बी मिरर्ड ऑन द बोर्ड. फिर आपका ऑडियोज अंदर आ जाएंगे, आपके इमेजेस अंदर आ जाएंगे, आपके वीडियोस अंदर आ जाएंगे. क्या बराबर है. On the Google you will be finding the slides, and on Microsoft Note you will be finding this OneNote. और ये एप्लीकेशन मैं क्लासरूम के अंदर मैं ये एप्लीकेशन की ज्यादा से ज्यादा मैं इस्तेमाल करता हूँ. आई एम यूटिलाइजिंग एंड यूजिंग दिस एप्लीकेशन ट्रेमेंडसली, एंड इट इज डेफिनेटली फ्रॉम द स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो इट इज हेल्पफुल. कैसे, मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं एक टॉपिक लेना है, मुझे अगर सपोज एक टॉपिक लेना है कि बैंकिंग करस्पॉन्डेंस, तो बैंकिंग करस्पॉन्डेंस का टॉपिक है, तो उसका मैं पहले से ही OneNote के अंदर स्टूडेंट को दे देता हूँ कि भाई देखो ये मेरा नोट है, ये मेरा वीडियोस है, ये मेरा टेक्स्ट है, और ये मेरा ऑडियो है, वीडियो है, टेक्स्ट और नोट्स है. So what happened that you know that when they come in the classroom next time, they are prepared because they have gone through the notes, they have gone through the audios, they have gone through the videos, and they have gone through the text. So what happens that you know that my work becomes easier. और क्लासरूम में क्या होता है कि जस्ट आई प्रिपेयर द ग्रुप. अगर सपोज यही क्लास में लेक्चर लेना होता है तो आई कैन नॉट हैव द इंटरेक्टिव सेशन. दो चीजें नहीं हो सकती है क्लासरूम में. आप बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हो, या पढ़ाओगे तो आप इंटरेक्टिव सेशन नहीं कर सकते हो. अगर आपको इंटरेक्टिव सेशन करना हो, योर चिल्ड्रन शुड बी हैविंग एन एक्सेस ऑफ नॉलेज. उनको जो भी अगर सपोज इंटरेक्शन करना है उसके बारे में पता होना चाहिए. तो उसके बारे में कैसे पता होगा, उसके बारे में ये ऐसे पता होगा वेब क्वेस्टिंग के थ्रू. वेब क्वेस्ट मतलब ये टॉपिक है, घर जाके गूगल में सर्च करो और फाइंड आउट करो, और फिर क्लासरूम में दूसरे दिन आगे करो. या फिर आप अपने खुद के मल्टीमीडिया प्रिपेयर कर रहे हो, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट और नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो,
जो बच्चों को पहले दे रहे हो। और जब क्लासरूम में आते हैं तो आई हैव सम 35 स्टूडेंट इन द क्लासरूम, तो मैं 5-5 बच्चों का जो 5-5 बच्चों का मैं ग्रुप बना देता हूँ, और 5-5 बच्चों को ग्रुप का आई मॉनिटर। ओके, व्हाट क्वेश्चन यू हैव, ओके, हर 5 ग्रुप के जो होता है उनका लीडर, हर एक का एक लीडर बना देता हूँ। सो व्हाट हैपन दैट दैट पावरफुल इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, एंड एज फार एज दिस पावरफुल इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, दिस पावरफुल इंटरेक्शन के अंदर मुझे जो फायदा होता है, द एडवांटेज व्हाट आई गेट इज दैट कि मैं हर एक ग्रुप को मॉनिटरिंग कर पाता हूँ। हर एक जो कमजोर बच्चा, आई कैन असिस्ट देम, आई कैन फील देम। नहीं तो क्या होता है कि 1 घंटा मेरा सिर्फ लेक्चर देने में ही चला जाता है, और वो क्या, उनके पास, बच्चों के पास वो रिकॉर्ड भी रहता है। अगर उनको वापस से लेक्चर से पहले प्री लेक्चर, बराबर है, लेक्चर के दरमियान प्री लेक्चर एंड पोस्ट लेक्चर, दिस मटेरियल कैन बी डेफिनेटली बी हेल्पिंग देम बाय लिप्स एंड बाउंड फॉर देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टफ, एंड व्हेन दे अंडरस्टैंड द स्टफ from the examination point of view and from the future learning point of view, it helps them a lot. There is no question about it as such. Okay, then next application what I am going to talk about is again here is Audacity. Okay, Audacity is an application where you will be finding that you have to prepare your own lectures. तो lectures के point of view से you have the recording, ठीक है। तो अब रिकॉर्डिंग के साथ साथ क्या होता है कि इसका आप ट्रांसक्रिप्शन भी कर सकते हो। वॉट एवर द थिंग्स यू हैव स्पोकन, यू कैन हैव एन एक्सेस टू ट्रांसक्रिप्शन। ओके, आपके पास अगर सपोज एप्पल फोन है तो जस्ट प्रेस, तो उसको वो एप्लीकेशन भी, इट इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर स्पीकिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन। आपने जो बोला, आप अपने आप ही वो सारी चीजों का ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, और इस तरह का ट्रांसक्रिप्शन इट हेल्प्स द स्टूडेंट। तो मैंने आपको है ना, ये जो जेन हार्ट है, इसकी 4 या 5 एप्लीकेशंस मैंने ये पूरा 150 एप्लीकेशन में से लिए। लेकिन आप, जैसे मैंने कहा कि जेन हार्ट 150 एप्लीकेशंस आप अगर डालेंगे तो आपको गूगल में से इसकी पूरी लिस्ट मिलेगी, और आपको अगर सपोज इसकी प्रोफेशनल एप्लीकेशन, पर्सनल एंड प्रोफेशनल एप्लीकेशन चाहिए या वर्क प्लेस एप्लीकेशन चाहिए, वो भी मिलेगा। बट टुडे आई हैव टॉक्ड अबाउट द एजुकेशनल एप्लीकेशन विच डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प। अब मैंने ये जो 150 एप्लीकेशन है, इसमें से मैं ये सारी एप्लीकेशन जो मैं क्लासरूम में और जो मैं वर्कआउट करता हूं, मैं उसके बारे में मैं बात करूंगा, बराबर। और वो एप्लीकेशंस हैं, मैं उसके बारे में आपको वो टॉपिक का नाम दूंगा, और ये जितने भी टॉपिक हैं मैं हमारे ब्रह्मभट्ट सर को मैं जितने भी हैं ये इमेजेस में देने वाला हूँ, वो आपसे शेयर करेंगे। और आप इसको, जैसे मैंने कहा, स्लाइड शेयर में, यूट्यूब में आप इसको देख के यू कैन हैव एन एक्सेस टू, आप इसको वीमियो में भी देख सकते हैं, टीचर्स ट्यूब में भी देख सकते हैं, स्लाइड शेयर में भी देख सकते हैं। खाली आपको इतना ट्यूटोरियल नाम डालना, देन यू विल बी हैविंग एन एब्सोल्यूट एक्सेस टू द थिंग्स रिलेटेड टू दैट एज सच। Okay, so let's have some 3 to 4 minutes break. Then I will be going to come to the presentations. For 1 hour, I am going to speak about the presentations, so that you can have an access to your own folder, and you can use from the community teachers point of view, from your point of view, and for your future learning point of view. Yes. So let's take some 2 or 3 minutes break. I want to have some water, and then I will be coming to the presentation as such. ब्रह्मभट्ट साहब, ब्रह्मभट्ट सर, मैडम, हेलो, कैन यू लिसन?
Okay, hello. Brahmat sir. Brahmat sir. जी सर. We will be having question answer session after in the end or not? एंड में सर, लास्ट में, एंड ऑफ द We will be सेशन. having the question answer session होगा लास्ट में. यस सर. हाँ, कितना 10 मिनट? सर 10-15 मिनट. Okay. If it is any So query or any question they are asking. so I'm going to finish my lecture at 4:50, quarter to 5, and then in last 10 minutes, if any of the students, any of our stakeholder, if they want to have an access to any of the question, then I will be definitely entertaining that as well. जी सर. Right? Okay. Yeah. Now I'm continuing my lecture. To continue. Okay. Yeah. So, coming to, as I told you that, that numbers of applications are there. And I just given you the name of Jane Hart, who is the founder of the educational authority. So you can have an access to just give the name of Jane Hart on Google and you're going to get number of things as well. So I talked about 4 to 5 applications from the 150 list. Now, whatever the application I am using in the classroom, you just have an access to, and most of the applications you will be finding that they are free of cost. Okay, so the application which I'll give the name of the application, and I will make you understand that that what this application is for. जो सबसे पहले एप्लीकेशन में है वो थिंगलिंक करके एक एप्लीकेशन, थिंगलिंक, THINGLINK. Okay, and as far as the name of this application itself suggests that that numbers of ideas what you are having in your mind, you can share with your stakeholders. जैसे आपका, जैसे सपोज एक इमेज है, जैसे आप एक टॉपिक है, जैसे एक इंश्योरेंस करस्पॉन्डेंस में एक लेक्चर ले रहा हूँ, तो एक इंश्योरेंस करस्पॉन्डेंस का मैं एक इमेज बना रहा हूँ. इमेज में एक लिया मैंने गूगल में से, और वो इमेज मैंने ये थिंकलिंक के अंदर मैंने वो इमेज को अपलोड किया मैंने. फिर उसके बाद अगर मुझे सपोज आई वांट टू हैव द नंबर ऑफ टेक्स्ट, 4-5 पैराग्राफ है, फॉर एग्जांपल 4 to 5 पैराग्राफ्स आई वांट टू राइट डाउन ऑन द बोर्ड, तो मुझे बोर्ड पे लिखने की जरूरत नहीं है. यहाँ मैं वो टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करके वो जो इंश्योरेंस कॉरेस्पॉन्डेंस है उसके अंदर ही मैं ले आऊंगा. सो आई कैन हैव 5 to 7 or 10 टेक्स्ट पैराग्राफ इमेजेस, और जस्ट मैं उसको आइकन पे क्लिक करता हूँ. यू हैव टू चूज द आइकन. आप वो आइकन टेलीफोन का आइकन ले सकते हैं, टेलीविजन का आइकन ले सकते हैं, आप आईपैड का आइकन ले सकते हैं, कार का आइकन ले सकते हैं, आप कोई भी आइकन ले सकते हैं. तो वो आइकन के अंदर है ना, जस्ट यू राइट डाउन द नेम ऑफ द टेक्स्ट वॉट एवर द पैराग्राफ इज कंसर्न, इंश्योरेंस कॉरेस्पॉन्डेंस से रिलेटेड वो आप टेक्स्ट डाल दीजिए. तो वो आइकन को जब आप प्रेस करेंगे तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू एक्सपांड. आप क्लासरूम के अंदर क्या करते हैं, बोर्ड वर्क करते हैं. तो बोर्ड वर्क करने के बाद बदले आप क्या करेंगे कि यू आर हैविंग सम 4 to 5 आइकन्स ऑन द इमेज ऑफ इंश्योरेंस कॉरेस्पॉन्डेंस, और वो सारे के सारे जो आइकन्स हैं वो खुल जाएंगे. और जैसे इमेज का, जैसे मैंने आपको कहा टेक्स्ट इमेज का आइकन खुलेगा, उसी तरह से यू कैन हैव एन एक्सेस टू द पिक्चर इमेज ऑल्सो. आपने सपोज जैसे इमेज सर्च से बहुत सारे पिक्चर लिए रिलेटेड टू इंश्योरेंस कॉरेस्पॉन्डेंस, तो वो इंश्योरेंस कॉरेस्पॉन्डेंस के इमेजेस यू हैव ऑन द वॉलपेपर, क्योंकि थिंगलिंक का एक वॉलपेपर होगा. तो वो वॉलपेपर के अंदर यू विल बी हैविंग नंबर ऑफ आइकन्स, और वो जो आप नंबर ऑफ आइकन्स है वो आप जैसे जैसे प्रेस करेंगे यू हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ द टॉपिक. आपको फर्स्ट पैराग्राफ पे आपको ये टॉपिक लिखना है, सेकंड पैराग्राफ पे ये टॉपिक लिखना है, थर्ड पैराग्राफ पे ये टॉपिक लिखना है. आप जैसे जैसे वो आइकन्स को प्रेस करेंगे द आइकन्स आर गोइंग टू गेट ओपन. तो जैसे टेक्स्ट के आइकन ओपन होंगे वैसे इमेजेस के आइकन ओपन होंगे, इमेजेस का आइकन ओपन होंगे वैसे वीडियो के आइकन ओपन होंगे, वीडियोस का आइकन ओपन होंगे तो ऑडियोस का आइकन ओपन होंगे, ऑडियो का आइकन ओपन होंगे तो एनिमेशन के आइकन ओपन होंगे. तो आपको एक वॉलपेपर के अंदर you are going to get numbers of paragraphs with the icons related to the text, related to the pictures, related to the videos, related to the animations and related to your audios. आपका एक ही पेज के अंदर everything you are going to get. और जो इससे भी बड़ी बात ये है कि आप ये जो वॉलपेपर का जो इमेज है जिसके अंदर आपने इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियोस, एनिमेशन
ऑडियो, ये सारी चीजें डालें, ये आप अपने बच्चों के साथ शेयर भी कर सकते हैं. You can share with your peer learning, you can share with your stakeholders, and you can have an access to whenever you want to require. आप इसको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप इसको ईमेल के द्वारा भी भेज सकते हैं आपको, बराबर है. सो आपका जो क्लासरूम टीचिंग है, classroom teaching becomes very easier for you, it becomes very exciting for you, it becomes very amazing for you. और दूसरी बात ये है कि बच्चे क्या चाहते हैं आज की तारीख में, हम लोग देखते हैं मोबाइल फोन में, दे वांट द रेजोल्यूशन, दे वांट द हाई रेजोल्यूशन इमेजेस, दे वांट द हाई रेजोल्यूशन टेक्स्ट. तो आप जितने भी, जो मैंने आपको इमेजेस की बात की या टेक्स्ट की बात की, ये जो सारी चीजों की बात की, why don't you put on your wallpaper and why don't you showcase in the classroom? And when you showcase this thing in the classroom, तो हम लोग जो 1 घंटा जो क्लासरूम में बोलते रहते हैं, आपका 75% आपका बोलना और बच्चों को भी मजा आएगा. ओके, टीचर्स टॉकिंग टाइम आपका रिड्यूस होगा और स्टूडेंट लर्निंग टाइम, SLT कहते हैं. क्या SLT मतलब स्टूडेंट्स लर्निंग टाइम, और TTT मतलब टीचर्स टॉकिंग टाइम. तो टीचर्स टॉकिंग टाइम रिड्यूस होगा. जैसे आपके यू हैव सम 180 आवर्स लेक्चर, आपके अगर सपोज 3 घंटे के लेक्चर हैं अगर सपोज आपके, तो यू मे बी फीलिंग फैटिक, यू मे बी फीलिंग टायर्ड. ओके, हम लोग हमारे स्टाफ रूम में जो चौथे लेक्चर में आते हैं तो बोले आई विल नॉट बी एबल टू गो फॉर माय 5th लेक्चर. तो ये जो यहाँ जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी हमारी हमको क्रिएटिविटी में हेल्प करती है, कोलैबोरेशन में हेल्प करती है हम लोगों को, बराबर है, कनेक्टिविटी में हेल्प करती है, बच्चों के साथ हम कनेक्ट रह पाते हैं, बराबर है, और हम लोगों को शेयरिंग में ये हेल्प करती है, और हम लोगों को क्लासरूम में हेल्प करती है. तो ये जो चीज है, ये जिस चीज हमको क्लासरूम के अंदर अगर हम यूज करते हैं, देन वी आर गोइंग टू एंजॉय एंड आवर स्टूडेंट्स यूज टू एंजॉय. हम लोग इंडिया के अंदर, हम लोग क्लासरूम के अंदर ना, वी यूज टू स्पीक अ लॉट. जस्ट 1 घंटे के लेक्चर में अगर हम लोग बोले नहीं ना, तो हमको ऐसा लगता है कि आवर लेक्चर इज इनएडिक्वेट, हमारा लेक्चर इनकम्प्लीट है. अब्रॉड एजुकेशन के अंदर द टीचर्स आर द साइलेंट क्रीचर्स, क्योंकि उनको पता है कि भाई जो हमारा काम है वो टेक्नोलॉजी कर रही है. और दूसरी बात है कि अब्रॉड के अंदर यू हैव सम 10 to 12 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम. हमारे यहाँ देयर आर नॉट लेस देन 50 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम. तो जहाँ 50 बच्चे हैं, तो वहाँ अगर टेक्नोलॉजी का काम अगर आप कर रहे हो, तो आप यू आर गोइंग टू फेवर योरसेल्फ एज फार एज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज कंसर्न. ओके, आप जस्ट यू गो इनटू योर इमेज शेयर, यू जस्ट यू गो इनटू द गूगल, और आप थिंक लिंक का आप खाली आप आइकन डालेंगे, तो यू आर गोइंग टू गेट द इमेज रिलेटेड टू दैट, और आपको इससे पता चलेगा. और जैसे मैंने आपको कहा वापस से कि जस्ट थिंक लिंक ट्यूटोरियल and you are going to get the videos related to that as such. Okay, then next application is word cloud. Word cloud, बराबर है. ये word cloud क्या होता है? Word cloud, wordle, word salad, आप कोई भी टॉपिक डाल सकते हैं. You put word salad, you put wordle, you put word cloud. Word cloud ऐसे टॉपिक होता है कि जैसे आपका, जैसे सपोज मैं एक टॉपिक ले रहा हूँ, फिगर्स ऑफ स्पीच, ठीक है, तो फिगर्स ऑफ स्पीच है, तो फिगर्स ऑफ स्पीच एक एक करके मैं लिख रहा हूँ. इसके अंदर ऐसा नहीं है. इसके अंदर क्या, आपका जो वॉलपेपर है, वॉलपेपर पे आप यू पुट ऑल द नेम टुगेदर, और वो सारे चीजों का वर्ड क्लाउड बन जाएगा. फॉर एग्जांपल मैं एक टॉपिक ले रहा हूँ, मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस है, तो मल्टीपल, देयर आर 9 टाइप्स और 10 टाइप्स ऑफ मल्टीपल. वर्बल इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक इंटेलिजेंस, then interpersonal intelligence, intrapersonal intelligence, naturalistic intelligence, kinesthetic intelligence, spatial intelligence. तो ये सारे इंटेलिजेंस है, मैं एक एक करके बोर्ड पे लिखूंगा. बट हियर इन वर्डल यू जस्ट टाइप इट आउट. ओके, या आप गूगल में से कॉपी करके पेस्ट करके भी वहां कर सकते हैं. क्या, तो अगर आपने गूगल में से कॉपी करके अगर उसको पेस्ट किया, तो इन द ब्यूटीफुल क्लाउड बन जाएगा, बड़ा सा क्लाउड बन जाएगा. और वो क्लाउड के अंदर यहाँ मल्टीपल इंटेलिजेंस ऊपर आएगा, फिर यहाँ आपका मैथमेटिकल इंटेलिजेंस आएगा, यहाँ आपका किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस आएगा, या म्यूजिकल इंटेलिजेंस आएगा, यहाँ आपका म्यूजिकल इंटेलिजेंस आएगा, यहाँ आपका नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस आएगा. ऐसा आपका पूरा क्लाउड बन जाएगा. तो ये इसका क्या फायदा क्या होता है कि डिफरेंट कलर्स में, और क्लासरूम में ये अच्छा लगता है, बड़ा लगता है. और ये तो मैंने आपको खाली मल्टीपल इंटेलिजेंस के खाली 9 इंटेलिजेंस की बात. लेकिन अगर सपोज यू हैव अ बिग पैराग्राफ, फॉर एग्जांपल यू हैव सम 300 वर्ड्स पैराग्राफ, ओके, तो 300 पैराग्राफ्स के अंदर जो कोर वर्ड्स हैं, उसके अंदर से जो रिपीट वर्ड है और कोर वर्ड है, दैट इट इज गोइंग टू कम ऑन दैट. और उसमें से अगर सपोज आपको कोई वर्ड डिलीट करने, तो वो डिलीट का ऑप्शन भी है, यू डोंट रिक्वायर दिस वर्ड एज सच. फॉर एग्जांपल मैं आज सुबह कर रहा था, तो मेरा 700 वर्ड्स का पैराग्राफ था,
तो दैट हैड कम इनटू 70 वर्ड्स, और वो 70 वर्ड्स कौन से थे? जो हमारी जो टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो जो बेस्ट वर्ड्स हैं और जो रिपीटेड वर्ड्स हैं वो उसको लेके उसका एक क्लाउड बना देती है, और वो जो क्लाउड है वो क्लाउड आप बच्चों को क्लासरूम में बता सकते हो आपके, और वो बच्चों को आप शेयर भी कर सकते हो आपके. सो यू नो दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन, वर्डल, वर्ड क्लाउड, वर्ड सैलेड. और वर्ड सैलेड के अंदर जैसे मैंने आपको कहा कि आपके खुद के नोट्स होंगे, या फिर गूगल में से आपने लिया होगा, या आपने आपके खुद के लेक्चर बनाए होंगे, उसको आप कॉपी करिए, उसको आप वर्डल में पेस्ट करिए, और पेस्ट करने से यू आर, और आप उसको डेंस भी बना सकते हो, स्पार्स भी बना सकते हो. डेंस का मतलब नंबर्स ऑफ वर्ड्स आर गोइंग टू कम, और स्पार्स का मतलब है कम से कम वर्ड्स आएंगे. बराबर है. उसको आप स्क्रीनशॉट लेके आप उसको मेल कर सकते हो, आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप उसको व्हाट्सएप पे दे सकते हो आप. सो नो दिस इज द बेस्ट एप्लीकेशन what I am using from the classroom point of view. और दूसरी बात क्या है कि क्लासरूम के अंदर क्या होता है कि you have the green board और you have a black board and you have a white chalk, बराबर, और आप सब लिख रहे हैं. यहाँ कुछ भी करना नहीं है आपको, यहाँ जस्ट आपको मिरर करना है, just on your mobile phone or on your iPad or on your pad, just press it out and the beautiful imagery you are going to get it out as well. So this is the application which I am using. और ये एप्लीकेशन जैसे मैंने आपको कहा कि ये जेन हार्ट की जो 150 एप्लीकेशंस हैं प्रोफेशनल, वर्कप्लेस और एजुकेशनल, मैंने इनमें से लिए. आई एम नॉट टेकन ओनली फ्रॉम एजुकेशनल बट आई हैव टेकन फ्रॉम ऑल द 3 कैटेगरीज, और ये 3 कैटेगरीज में से लिए. और मैं आपको इतना बताऊं कि आई एम डेफिनेटली एंजॉयिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स इन माय क्लासरूम टीचिंग. देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट एज सच. ओके, देन अगेन ये जितनी भी एप्लीकेशन में आपके साथ में बात कर रहा हूँ, ऑल दिस एप्लीकेशंस आर अवेलेबल इन द गूगल प्ले. आपका ऐप स्टोर में भी मिलेगी, लेकिन आपको गूगल प्ले में भी मिलेगी. देन नेक्स्ट एप्लीकेशन आई विल बी टॉकिंग अबाउट इज द वॉइस ड्रीम. बराबर है. ये वॉइस ड्रीम एप्लीकेशन ऐसी है कि फॉर एग्जांपल यू डोंट वांट टू रीड द टेक्स्ट. ओके, क्लासरूम में आपको टेक्स्ट नहीं पढ़ना, या आपको घर पे कोई टेक्स्ट नहीं पढ़ना, आपने गूगल में से एक आर्टिकल ले लिया. आपने क्या, तो गूगल में से जो आर्टिकल लिया आपने, या फिर आपने अपने खुद के नोट्स बनाए, बराबर है, तो उसको अगर आपको सपोज उसको जिसको कहते हैं कि टेक्स्ट टू स्पीच मतलब कि आपने उसको बुकमार्क कर दिया, या आपने उसको यू हैव टेकन फ्रॉम गूगल टू और फ्रॉम योर ओन टेक्स्ट टू द स्पीकिंग पार्ट. और ये जो स्पीकिंग पार्ट है ये क्या है, इसकी आप स्पीड आगे पीछे कर सकते हो, आप इसको शेयर कर सकते हो, आप इसको, बराबर है. और आपको अगर सपोज आपका 1000 वर्ड्स का अगर सपोज आर्टिकल है, तो you don't want to go from the first paragraph, you want to go from the second paragraph, you want to go from the third paragraph, you want to go from the fourth paragraph. और अगर सपोज आपका डिवाइस अगर एडवांस है अगर सपोज, तो क्या आपको एडवांटेज क्या मिलेगा? यू आर गोइंग टू गेट द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड लुकअप, जिसको कहते हैं, बराबर है, स्पीकअप या लुकअप. स्पीकअप का क्या मतलब होता है? दे हैव द ऑटो डिक्शनरीज. ऑटो डिक्शनरी का क्या मतलब होता है कि जैसे आपका कोई पैराग्राफ है, आपने जिसको वॉइस ड्रीम में डाउनलोड कर दिया, आपने वॉइस ड्रीम में आपने कैरी कर दिया, तो उसका क्या होगा कि उस वर्ड को अगर आप प्रेस करोगे, you press any of the word and you are going to get the meaning of it, you're going to get the definition of it, and the word is you can listen the pronunciation of that word as well. ये आज की तारीख में 2020 के बाद न्यू टेक्नोलॉजी आई है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑटो डिक्शनरी, जिसको हम लोग कहते हैं ऑटो प्रोनाउंसिएशन, बराबर है. और ये ऑटो डिक्शनरी और ऑटो प्रोनाउंसिएशन क्या होता है कि जो हमारे बच्चे होते हैं उनको बार बार डिक्शनरी में से देखना पड़ता है, दे डोंट हैव टू गो थ्रू द डिक्शनरी. और हमारे यहाँ क्या बच्चों के थोड़े प्रोनाउंसिएशन वीक होते हैं, दे आर हैविंग द faulty pronunciation. So what happened that you listen through the technology, you listen to the device, and listening and going through the dictionary, it is definitely going to help it out as well. Again, I will be naming the application Voice Dream. Okay, Voice Dream Recorder, Voice Dream कहते हैं उसको. और वॉइस ड्रीम के साथ साथ इसके साथ एक इंटरनल एप्लीकेशन और भी आता है, इसके अंदर ही आता है एक एप्लीकेशन, बराबर है, इसके अंदर जिसको हम लोग स्कैनर कहते हैं. स्कैनर क्या होता है कि जैसे क्लासरूम के अंदर आप जैसे कोई चीज पढ़ रहे हैं आप, तो आप उसका इमेज लीजिए, स्कैन कर लिए, और आप स्कैन करेंगे ना, देन यू कैन हैव दैट थिंग, इट कैन बी मिरर्ड थ्रू द प्रोजेक्टर इन द क्लासरूम. आपके टीवी पे होगा या आपका प्रोजेक्टर पे होगा, तो वो मिरर हो जाएगा, और वो मिररिंग के बाद आप उसको प्ले करेंगे, then you can have an access to play. For example,
मैं 3 दिन पहले एक लेक्चर ले रहा था हेमलेट पे, तो हेमलेट का मैंने 3 पेज मैंने उसके स्कैन किए, और वो स्कैन किए हुए पेज जो है वो बोर्ड पे आ गए, और बोर्ड पे आने के बाद फिर आई डिड नॉट रीड बट आई जस्ट प्लेड इट आउट। तो प्ले करने के बाद एवरीथिंग वाज इट वाज एबल टू रीड इट आउट। तो कई बार क्या होता है कि हमको पढ़ना नहीं होता, कई बार क्या होता है कि बच्चे किताब में क्लास में किताबें नहीं लाते हैं, बराबर है, और कई बार क्या होता है कि हमको बड़ी इमेज क्लास में बतानी पड़ती है। तो यू कैन हैव द स्कैनिंग पार्ट, यू कैन हैव द मिररिंग पार्ट, एंड यू कैन हैव द स्पीकिंग पार्ट। वो तीनों की तीनों चीजें आपकी क्लास में है, और इसके अंदर इनबिल्ट एप्लीकेशन है, वॉइस ड्रीम रीडर के अंदर वो इनबिल्ट एप्लीकेशन है। तो दैट इज गोइंग टू हेल्प इट आउट। और जैसे मैंने कहा आपको कि जैसे स्पीच टू टेक्स्ट, तो ये स्पीच टू टेक्स्ट के अंदर 2 एप्लीकेशन का मैं नाम और लूंगा। एक है स्पीचिफाई करके। स्पीचिफाई यू टेक फ्रॉम एनी ऑफ द न्यूज़पेपर, आपका जो ई न्यूज जो आता है आपका, या एनीथिंग फ्रॉम द गूगल, एनीथिंग फ्रॉम द इंटरनेट, एंड यू जस्ट कॉपी पेस्ट इट एंड यू पुट इनटू द स्पीचिफाई, और स्पीचिफाई के अंदर एवरीथिंग विल बी एबल टू रीड इट आउट। और दूसरा एप्लीकेशन है स्पीच सेंट्रल करके, बराबर। और ये स्पीच सेंट्रल अगेन यू कैन हैव एन एक्सेस टू, आपको जैसे फॉर एग्जांपल मॉर्निंग वॉक करने के लिए गए हैं, या आपको घर पे रात को सोते सोते पढ़ना है आपको, या आज आपकी बहुत ज्यादा पढ़ाई होगी बट यू डोंट वांट टू रीड बट यू वांट टू लिसन इट आउट, या आज की तारीख में हम लोग देखते हैं कि जो बच्चे हैं या हम लोग भी वी यूज्ड टू हैव द माइक्रोफोन्स, वी यूज्ड टू हैव द हेडफोन्स, ठीक है, एयरपोर्ट्स और हेडफोन्स कर। तो हम लोगों का क्या होता है, जैसे मॉर्निंग के अंदर कई बार मैं जो मेरा चलना होता है या शाम को चलना होता है, आई यूज्ड टू हैव माय लेसन्स लिसन्ड। तो जो वो लेसन जो मैं सुन लेता हूँ मैं, तो वो जो चीज होती है वो मेरा टाइम सेविंग हो जाती है, मेरा चलना भी हो जाता है, मेरा टाइम सेविंग भी हो जाता है, इट हेल्प्स मी आउट एज। फॉर एग्जांपल डे बिफोर यस्टरडे आई हैड वन ऑफ द आर्टिकल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, बराबर। वो मिनी थीसिस थी, और वो मिनी थीसिस थी, इट वाज ऑफ 3500 वर्ड्स। तो मुझे ऐसा लगा मैं कब पढ़ पाऊंगा, तो आई जस्ट पुट इन द स्पीच सेंटर, और स्पीच सेंटर में रख के जस्ट आई हैड माय हेडफोन। तो हेडफोन में वो 3500 वर्ड्स हैं जो मेरे 45 मिनट्स के अंदर आई वाज एबल टू कंप्लीट इट आउट एज आई डिड नॉट रिक्वायर टू रीड इट आउट एज। तो इस तरह के जो एप्लीकेशंस हैं, आपके पास हेडफोन्स हैं, आपका अगर सपोज आपके पास टाइम का प्रॉब्लम है, आप ट्रेवलिंग कर रहे हो, आप वॉक्स कर रहे हो, आप या आप कहीं सपोज यू आर स्ट्रैंडेड, आप कहीं फंस गए हो जहां आपको टाइम पास करना है, so this type of listening definitely help। और हमारे बच्चों के लिए ये listening क्यों मदद करती है, why it helps to our children, because they can improve their pronunciation, native listening। आज की तारीख में क्या होता है कि हमारे इंडियन टीचर्स के अंदर they too have the grammatical problem, they too have the lexical problem, they too have the strategic problem। तो उसका point of view से क्या होता है कि when you listen to the native speaker, then definitely you improve your fluency, you improve your grammar, you improve your vocabulary, you improve your pronunciation, all sort of stuff, it helps you out as well। तो मैंने अभी जो 3 एप्लीकेशन की बात की, आई एम गोइंग टू अगेन रिपीट दैट एप्लीकेशन। वन इज वॉइस ड्रीम रीडर, जिसके अंदर स्कैनर भी है, ओके। सेकंड इज स्पीचिफाई, एंड थर्ड इज स्पीच सेंटर, बराबर है। ये तीनों के तीनों एप्लीकेशन, ऑल दिस 3 एप्लीकेशन यू कैन हैव एन एक्सेस टू the slide shares, you can have an access to the YouTube, you can have an access to Vimeo, you can have an access to teachers tube। ये मैं application teachers tube, Vimeo, slide share बार-बार इसलिए बोल रहा हूँ so that it can be cemented in your mind, आपके दिमाग में ये application का impact पड़ना चाहिए। और आप please I request you that that you open this application, and it is definitely going to help you for your learning process, for your teaching process, and for your understanding process। Then next application, ये जो application again इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन क्या है, जिसका मैं नाम दूंगा लेड इट स्कैनर, लेड इट बैनर, लेड इट LEDIT, लेड इट स्क्रॉलर, SCROLLER। स्क्रॉलर क्या होता है, हम लोगों को पता है ये वर्ड स्क्रॉलर, और लेड इट वर्ड भी हमको पता है, बैनर वर्ड भी हमको पता है। स्टेशन के अंदर ट्रेन इतने बजे आने वाली है, या एयरपोर्ट के अंदर प्लेन इतने बजे आने वाला, यू यूज्ड टू हैव एन एक्सेस टू द रीडिंग। बैंगलोर की फ्लाइट इतने बजे आएगी, अहमदाबाद की फ्लाइट इतने बजे आएगी, फिर हैदराबाद की फ्लाइट इतने बजे आएगी। या फिर दुकानों के अंदर हम लोग देखते हैं, दुकानों के अंदर यू हैव द स्टफ एज सच,
that that video phone or Airtel or Samsung TV or this or that. We used to have number of scroll. Now why don't we bring this thing in our teaching process also? टीचिंग के अंदर फॉर एग्जांपल मैं एक टॉपिक ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, ठीक है? तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के मेरे 10 सेंटेंसेस हैं फॉर एग्जांपल, ओके? तो 10 सेंटेंसेस हैं, तो 10 सेंटेंस क्या होगा कि या तो मैं उसको वर्ड yes, Brahmat sir, can you watch me, Brahmat sir? Yes, Can you sir. watch me, sir? We can. Yes, sir. We can watch it. Hello. Yes, sir. Hello. Hello, sir. Maybe your internet connection is weak. Please rejoin with. Hello. Rakesh Damir, sir, your voice is not getting by us. Your voice is not getting. Hello. Rakesh, sir. Hello. Hello. Rakesh, sir. Your voice is not clear, sir. Voice is not available. Uh, Please rejoin. Otherwise, sir, internet connection is weak. Maybe your voice is not available.
No, sir. No, sir. Your voice is not. Please exit and rejoin again, sir. Uh, it's a still volume problem. Your mic is not working, sir. Dear participants, you can get the sir our David sir voice. Please write in chat box. Hello. Sir, we can't hear your voice, sir. Rakesh David, sir, we can't hear your voice.
Rakesh sir, we can't hear your voice. Anyone can't hear your voice, please exit and rejoin again. We cannot hear your voice. Please exit and rejoin again, sir. Can you listen me? Yes, sir. Now we can perfectly listen. For how many minutes? Where was the cutoff? Approximate 7. 7 minutes. Okay. Yeah. You could have called me. No problem. Shall I start my Yes. lecture? Yes, sir. Uh, Yes. uh, sh- uh, uh, okay, fine. So I was talking about the next application was the blink list, and as far as this application is concerned, as I told you that that it is related to book summaries, and 500 600 pages of the book you can have within 15 minutes, and the 15 minutes audio is there, and the short and gist of the novel or the book you can have an access to. So as I told that that as far as this application is concerned, for getting the knowledge, getting the information, and of course to have an access to the language, and the audios, the 15 minutes book, the 15 minutes audio, you can have an access to 700 pages of the book, and you have more than 7,000 books on the wallpaper, and you can choose any books related to psychology, any related to literature, related to economics, related to politics, related to sports, and you have numbers of things that you can have an access to. So there are numbers of applications related to book summaries, but one of the best application is the Blinkist, which is free of cost for one novel a day as such. So of course this is one of the things, and besides it is that you have a TED Talk, and as far as the TED Talk is concerned, you have more than 170 topics, and on 170 topics you may be getting the topics related to your subject. So you have the subtitles related to that. The subtitles are coming in Hindi, Gujarati, and there are more than 70 languages where you get the subtitles to. And whenever I have an access of time, then definitely I go for the TED Talks related to my subject. And it is not only the teachers, but we have to specifically percolate to the students also. They too can have an access to number of TED Talks related to the subject, which is definitely going to help them by lips and bounds. There is no question about it as such. Okay. Then you have the transcriber. Now transcriber is again the application where whatever your audio lectures are concerned, it is it is it comes in the word form as such. For example, you attend a lecture, okay, and you just put your recorder near the professor, near the teacher, or at the home also when you are preparing a lecture. So you get the
text related to the things what you have spoken. And again, you have the editing thing also. Wherever you think that you have made a mistake, that you are going to you can correct that mistake with that thing as well. So as far as, just as I told you that in iOS, in Apple, in iOS, there is an application, just press it, and in a Google Play, you have the voice recorder, audio recorder, and audio editor, and you just write down the title transcriber, and you are going to get numbers of application, and many of the application are free of cost. So we decimate our work, we reduce our work by just getting the text and notes, okay, the audios and text, sorry, the audios and text. And that it is not only facilitating us, it is not only helpful to us, but it is helpful to our student also. For example, I want to share some audio notes with my student, but with it, if they are getting the transcription with it, then definitely my students are definitely going to get a lot of benefit related to it. So your transcriber, your speech to text, for your text to speech, it is definitely going to help it out as such. Okay, as I talked about the text to speech. Now the second is the speech to text. Speech to text is an application. You go into the Google Play and you just type speech to text, and you're going to get number of items. Whatever the things you have spoken speech, it is going to get into a transcribed form, and you have the recorders also. So that recorders definitely help the student a lot from the academic purpose as such. Then next application is that that there are two names of the application. One is a brainstorming application, or what we call it as a mind mapping application. Mind mapping application means you have the lot of ideas, but that ideas you have to project on the board. So every idea you are going to write down the board. But nudes, what we call it is a nudes. You just press to one round nudes, the second nude is going to come. Then you press the next nude, the third nude is going to come. So this application, mind mapping application, you get into different colors. You can insert the audios in it, you can insert the videos in it, and you can insert numbers of things in it from the student point of view. So just go in your slide share for the mind mapping topic, and in the videos also you are going to get numbers of videos related to mind mapping. And as I told you that that there are triangle, square, round nudes, and you can increase your nudes with it. Just press the button, just press the one nude, and you will be finding numbers of nude, and you can insert the text, you can insert the audios, you can insert the videos, and the beautiful picture comes in it as such. Okay, it is like a word cloud. Okay, so mind mapping is also a very wonderful application where the students are definitely going to get the benefit related to it as such. Okay, then I talked about the TED Talk. One thing I forgot to talk about is the best TED Talks by the teachers. Okay, just in your TED Talks or in your Google, write down the best talks by the teachers, and there are more than 100 talks by the teachers. They have spoken on different subjects, and I want that that you should listen to this talks, and you will be definitely enjoying tremendously. As I told that that you have the option for subtitles also. You can definitely get the subtitles with this thing as such. So the TED Talks for the teachers, it is definitely going to get beneficial to you, no question about it. Then online learning. Excuse me. Okay, online learning. Okay, online learning, you have MOOC. Okay, MOOC or online learning. Online learning programs, that at home you can get the degrees, and you can get the numbers of training certificates. And two applications I will be talking about, three applications. One is EDX, second is Coursera, and third is Skillshare. These are the three applications. If you don't want to go for your for example, for your university learning, or you don't want to go to abroad for getting a certificate, worldwide you are going to have an access to the certificate which are recognized by the employers in India and abroad. So no, we are having the craze. हम लोगों का craze है कि foreign country में जाके हम लोग पढ़ेंगे और certificate लाएंगे, ये सारी. Fine, you can do that. But that if suppose you want to have an access to the knowledge at home, if you want to have the certificates at home, if you want to have the know-how at home, then
these are the online platforms which are going to help the students a lot. And of course, these certificates has its validity. और मुझे पता है, मैं कुछ बच्चों को मैं अच्छे से जानता हूँ कि जिन्होंने अहमदाबाद के अंदर अच्छी कंपनियों में ये ट्रेनिंग सेंटर से सर्टिफिकेट्स लेके जॉब लिए हैं, provided that they should have the knowledge, and they are providing the resources, they are providing the material, they are providing their website, they are providing the videos, they are providing everything, and they are taking the test, and that text, that as far as the tests are concerned, the validity of test is soundproof, is of course recognized. So in my opinion, the students, the parents who are not able to afford, या जिनको जाना नहीं है, या जिनको छोटे छोटे कोर्स करने हैं, 3 महीने के या 6 महीने के कोर्स करने, then definitely it is going to help it out. And I'll tell you, in COVID I have done 2 courses. One is certificate of English language teaching to adults, and second is diploma in English language teaching to adults, which I paid 70,000 for one course as such. But I don't have to move out of my home, and as far as the certificate is concerned, I can definitely get a job in abroad by the help of this certificate, with my experience and with the certificate. In COVID, in 2 years, in 1 year I've done CELTA, and another year I did my Delta, okay, as a language teacher, okay. So of course, I just recommend this course, Coursera, EDX, Skillshare, which will definitely benefit to the student where with the jobs they can do, with the other studies they can do, and at home they can do. And when you, in your CV, when in your curriculum vitae or in your resume, you talk about this courses, this certificates you have done from the MOOC or from the online learning, it is definitely going to help it out as such. Okay, then next topic is typorama. Typorama means text on images. जैसे आपने फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको एक चीज बताई कि आपने गूगल में से कुछ इमेजेस लिए, या इमेज सर्च में से कुछ इमेजेस लिए, या पिक्ट्रो में से कुछ इमेजेस लिए, और आपने अपने खुद का एक फोल्डर बनाया, प्रेजेंटेशन बनाया है सपोज, ठीक है। तो वो प्रेजेंटेशन में क्या होगा कि आपको अपना नाम डालना पड़ेगा, अपना टाइटल डालना पड़ेगा, एड्रेस डालना पड़ेगा, ये वॉट एवर द थिंग्स आर कंसर्न। तो यहाँ आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी वो इमेजेस पे। तो वो इमेजेस के क्या, मैं 3 नाम दूंगा आपको। One is Pixu, second is S-Shot, and third is Typorama. Okay, ये एप्लीकेशंस हैं जिसको हम लोग वाटरमार्क एप्लीकेशंस कहते हैं। और ये जो वाटरमार्क एप्लीकेशंस हैं, वाटरमार्क एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि ये टेक्स्ट पे आपने अपना नाम और अपना जो भी अपनी अदर इंफॉर्मेशन डाके इसको अपना, बट द थिंग इज दैट you to see that that what are the rules of plagiarism. अगर सपोज इसको वर्ल्ड वाइड शेयर नहीं करने, या कहीं अगर सपोज ऑफिशियली शेयर नहीं करने, देन यू कैन पुट योर नेम इन दिस इमेजेस वेयर यू कैन हैव एन एक्सेस टू दैट। और आपको अगर सपोज एक एप्लीकेशन का मैं नाम दूंगा जो बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, जो आपको which gives you the permission for writing the thing, unsplash करके एक एप्लीकेशन है, जिसके अंदर आप हाई रेजोल्यूशन एप्लीकेशन लेके उसके अंदर आप अपना नाम और अपना जो भी आपकी अदर डिटेल्स है वो आप डाल सकते हैं। लेकिन इसके अंदर ये इमेजेस में आपका टाइपिंग इजी हो जाता है। ओके, ये टाइपिंग के अंदर यू हैव द डिफरेंट फॉन्ट्स, यू हैव द डिफरेंट कलर्स, यू हैव द डिफरेंट शेप्स, एंड you can have an access to this application by putting the various details in every image, and that is going to make your presentation your own presentation when you are sharing or when you are showing among the students. So ये जो एप्लीकेशन है टाइपोरामा करके, इसके अंदर 2 एप्लीकेशन है, one is टाइपोरामा and second is वीडियोरामा. टाइपोरामा is the application for the images on text, and वीडियोरामा is the application to put the text on videos. जैसे आपने अपने 3 मिनट के, 4 मिनट के, 5 मिनट के वीडियोस बनाए, तो वो वीडियोस के अंदर यू हैव टू पुट डाउन योर ओन डिटेल्स। तो वो डिटेल्स के अंदर टाइम दिया होता है कि आपको 15 सेकंड की आपको डालना है, या 1 मिनट के लिए डालना है, या 25 सेकंड के लिए डालना है। यू हैव द टाइम, यू हैव द कलर्स। ओके, तो उसके अंदर आपके अपने वीडियोस के अंदर यू कैन प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ वॉट एवर द थिंग्स यू वांट टू पुट इट। या आपको अगर सपोज कुछ भी नहीं करना, तो जस्ट यू गो इनटू योर गूगल प्ले
and write down only two phrases. One is text on images and second is text on videos. Text on images or text on videos ka you are going to get numbers of images related to that, and you are definitely, you can in the classroom or in sharing, you will be having your own name and own designation. That is the advantage what you are going to get related to that as such. Okay, then uh, okay, so these are the things that, what I talked about is last application I'm going to talk about is audio note. And as far as that application is concerned, that is, that you're preparing your own notes with the audios, with the images, and definitely you can share with the students and you can have an access to that. And just you write down the title audio notes and you are going to get numbers of applications. आपने जैसे टेक्स्ट डाली मेथड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, तो मेरी टेक्स्ट आ गई. देन इमेजेस का बटन होगा, आइकन होगा, तो आप प्रेस इट आउट, देन यू कैन हैव द इमेजेस रिलेटेड टू इट. देन उसका वीडियो डालना है आपको, तो आपकी जो गैलरी में जो वीडियोस पड़े हैं वो आपके गैलरीज के अंदर से वीडियो आपके नोट्स में आ जाएंगे, बराबर, ऑडियो एंड वीडियो नोट्स. फिर बाद में अगर लास्ट में अगर सपोज यू वांट टू हैव योर ओन राइटिंग, तो राइटिंग के अंदर ड्राइंग फॉर्म आएगा, तो ड्राइंग फॉर्म है, तो इन वन नोट ओनली यू विल बी हैविंग योर टेक्स्ट, you will be having your images, you will be having your audios, and you can share with it as such. It is like ThingLink, जो मैंने आपको पहले बताई थी, it is absolutely related to that. It is like ThingLink as such. तो मैंने आपको ये सारे applications के बारे में बताया है. अभी आपको जो कुछ पूछना हो, तो definitely any of the questions will be entertained by me, and all the images I'm going to share with you. जो मैंने जितनी भी बातें की हैं आपके साथ, मैंने लगभग 1.25 घंटे आपसे बात की है, तो 1.25 घंटे मैंने आपको कुछ जो एप्लीकेशंस के मैं आपको प्रेजेंटेशन भी दूंगा, कुछ एप्लीकेशंस के मैं आपको लिंक भी दूंगा, कुछ एप्लीकेशंस के मैं आपको इमेजेस भी दूंगा. ये सारी चीज़ें आपको गूगल के थ्रू या इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू आपको एक्सप्लोर करने के अंदर काम आएगी. लेकिन जितनी भी एप्लीकेशन मैंने आपको जो बताई हैं, अगर सपोज आप उसको अगर सर्च आउट करते हो, अगर सपोज, तो आप अपना उसका एक फोल्डर बना के उसके अच्छे से अगर वर्कआउट करते हो, तो आपका एक अच्छा क्लासरूम टीचिंग मटेरियल बच्चों के लिए और आप अपने लिए होगा तैयार. देयर इज नो गेमसिंग और देयर इज नो डाउट अबाउट इट. और जो मैंने आपको जो एक नाम बोला जेन हार्ट, वो आपका एक अम्ब्रेला में सारे एप्लीकेशंस आ जाते हैं, जो वर्क प्लेस के बारे में, प्रोफेशनल्स के बारे में, एजुकेशनल एप्लीकेशंस के बारे में शी हैज टॉक्ड अ लॉट. और उसकी हर साल उसकी लिस्ट बनती है 150 एप्लीकेशन की, जो अक्टूबर में आती है. एंड सिंस 2007 she is having her own, she is having the list of the application body, जिसको हम लोग यादी कहते हैं, लिस्ट कहते हैं. तो वो लिस्ट हर साल अक्टूबर में आती है, तो वो आप लिस्ट में से देखिए कि which is the best application for your teaching purposes as such. And that is the thing that that it is definitely going to help you as such. अभी आपका कोई प्रश्न हो तो मुझे पूछिए. Any question from your side, you ask me out. I will be definitely try to entertain your answers related to whatever your questions are concerned. Any questions, please? Any questions? Yeah, dear all participants, if you have any questions, so you can ask in chat box. So sir will be reply you on your questions. There is a no questions till now. There is a comments are there. Nice session, very informative session, useful sessions, and very informative session. Kind of comments are there. But participants, if you have questions, so we have the 10 minutes for the question answer regarding this session. If you have any, raise your questions. Yeah, any question from your side, I will definitely entertain. आपका जो भी आपको ऐसा लगता है कि जो मैंने जो बात की है, या आपकी तरफ से भी कुछ पूछना हो, कुछ एप्लीकेशन के, कुछ हार्डवेयर के बारे में पूछना हो, कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में पूछना, कुछ वेब क्वेस्टिंग के बारे में पूछना हो,
कुछ एंड्रॉयड iOS या कुछ ओपन रिसोर्स एप्लीकेशन के बारे में पूछना, कुछ मूक के बारे में पूछना हो, आप मुझे पूछे तो मैं उसका एंटरटेन करने की मैं आपको कोशिश करूंगा। मैं एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड विल बी हाईली appreciable. No question, sir. Sir, not any question from our participant. ओके, तो मैं इसको समराइज करता हूँ मैं 5-7 मिनट में मेरे लेक्चर Okay, को, no problem, sir. है ना। और Yes, आपका जो ठीक है. हाँ जो है जो मतलब मेरे टाइमिंग्स के हिसाब से मैं इसको अभी जो मैंने आपको ये जितनी भी बातें बताई ये सारे मेरे अनुभव हैं। और एज अ लैंग्वेज टीचर मुझे ऐसा लगा कि एजुकेशन के अंदर जो जिस तरह का टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए, बिकॉज मैंने काफ़ी सेशंस अटेंड किए इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ये जो जो हम लोगों का जो टेक्नोलॉजी है ये तो खाली यहाँ नाम है, खाली हम लोग स्किल्स की बात करते हैं लेकिन स्किल्स तो यूज़ होता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस चीज़ की बात करनी चाहिए। तो 7 साल से 8 साल से रिफ्रेशर कोर्स में, केसीजी में, ओरिएंटेशन में, फिर ऑनलाइन अब्रॉड के अंदर, इंडिया के अंदर मेरे कॉलेज में और दूसरे कॉलेज बहुत सारे प्रोफेसरों की मैंने अपना एक खुद का एक कोर ग्रुप बनाया। और कोर ग्रुप में मुझे जो लगा कि ये जो एप्लीकेशंस हैं अगर ये बच्चों को, टीचर्स को और बच्चों को अगर सपोज इनको मिले अगर सपोज, देन उनका क्लासरूम टीचिंग और क्लासरूम शेयरिंग जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। और आप मानेंगे नहीं, मैंने एक एप्लीकेशन पे मैंने वर्कआउट किया और मुझे ऐसा लगा कि ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्प्लॉयमेंट स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, नो हाउ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं टीचर्स को शेयर करूं तो एक एक टीचर अगर सपोज यहाँ 50-50 बच्चों को अगर शेयर करती है अगर सपोज, देन डेफिनेटली द थिंग्स आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट हेल्प। और मुझे इसके अंदर जगदीश जोशी सर ने और ब्रह्मभट्ट सर ने मुझे काफ़ी मदद की है। और ऑफ कोर्स मुझे जो जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी मिली है उसको अपॉर्चुनिटी का टेकन एन एडवांटेज टू दैट। और एडवांटेज ये था कि भाई जैसे वो एक गाना है कि दीप से दीप जलाते चले, तो दीप से दीप जलाने का पॉइंट यही होता है कि अगर मैं 50 टीचर से बात करता हूँ तो हर एक टीचर जो है वो आगे बहुत सारे स्टूडेंट से बात करेगी। तो मेरा एक नज़रिया यही है कि जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं जो हमारे बात करते हैं कि भाई स्किल शेयर पे ज़्यादा से ज़्यादा भार देना, और इसी की वजह से हमारे यहाँ का एक अलग एक डिपार्टमेंट बना है कौशल्य करके है। तो वो जो कौशल्य क्या है वो स्किल का भाग है। और जो स्किल क्या है कि जो हमको नेट और हमको इंटरनेट और हमको ये जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं हमको इतना कंटेंट देते हैं, तो वो कंटेंट का अगर हम लोग अगर उपयोग ना कर पाए तो हम लोग, मैं ऐसा मानता हूँ कि वी विल नॉट बी एबल टू जस्टिफाई द पॉस्टरिटी। हम लोग जो हमारे आते हुए स्टूडेंट्स हैं उनको हम जस्टिफाई नहीं करते, क्योंकि 10 साल के बाद हम ये पूछते हैं कि हमारे टीचर ने हमको क्या सिखाया। हमारे जो यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस के प्रोफेसर थे, एक प्रोफेसर आज हम उनका गौरव से नाम लेते हैं। तो वैसे ही अगर सपोज टेक्नोलॉजी अगर सपोज है तो हमारा आज की तारीख में पढ़ाना महत्व का नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि आप एक चीज़, जितने भी मित्र हैं आप एक चीज़ जानिए आप कि जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ें गूगल में अवेलेबल है। एवरी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन गूगल, every information is available on internet of things, every information is available through presentation on slideshare। तो आपने जो क्लास के अंदर जो दिया वो तो बच्चे तो अपने आप ही ले सकते हैं उसको। तो जो हमारा जो महत्व है, हमारा जो इम्पोर्टेंस है, हमारा इम्पोर्टेंस ये है कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसको मल्टीमीडिया का हम लोग इनकॉर्पोरेशन करें। और मल्टीमीडिया का इनकॉर्पोरेशन का जो आज की तारीख में है, जो आज के बच्चे क्या जानते हैं, वो आज के बच्चे हाई रेजोल्यूशन 360 डिग्री, फिर ऑडियोज, फिर एनिमेशन, फिर वीडियोस, ये सारी चीज़ों की भाषा जानते हैं। तो हम लोगों को क्लासरूम में क्या है कि वी डोंट हैव टू टॉक अबाउट ओनली द थिंग्स, बट वी हैव टू यूज द मल्टीमीडिया। और ये जो मल्टीमीडिया है हम लोग क्लासरूम में यूज करेंगे
तो बच्चे अपने मोबाइल पर यूज़ करेंगे। अगर हम लोग हमारे क्लासरूम में नहीं यूज़ करेंगे तो बच्चे फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तक ही मर्यादित रहेंगे। तो हमको क्या व्हाट्सएप और फेसबुक की बाहर की दुनिया भी जानी है, जो एजुकेशन से रिलेटेड है, जो लर्निंग से, जो कोर लर्निंग से रिलेटेड है। दो तरह का लर्निंग होता है, एक लर्निंग होता है सर्टिफिकेट्स लेना, और दूसरा होता है कि इस तरह का लर्निंग लेना कि सर्टिफिकेट के साथ हमको स्किल भी मिले, कि जो हमको कल एम्प्लॉयमेंट में हमको काम आए। तो जो मेरा जो आज जो 1.25 घंटे का लेक्चर था, उसका सिर्फ महत्व इतना था कि जो कुछ मैं जाना है, जो कुछ मैंने क्लासरूम में यूज़ किया है, जो कुछ मैंने 10 साल के अंदर जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, वो मैं आज आपको 1.25 घंटे के अंदर मैंने आपको शेयर करने का प्रयत्न किया। और सर ये हाँ बोलो। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन। बोलिए बोलिए। कोई पार्टिसिपेंट का है सर, हम्म, आपको दिखता होगा, देखिए सर। हाँ For quality video, one application is video and हाँ, दो another one. एप्लीकेशन है। हाँ, ये वीमियो की स्पेलिंग गलत है, VEMIO, वीमियो। और जो दूसरा एप्लीकेशन है वो टीचर्स ट्यूब है। वन इज टीचर्स ट्यूब एंड सेकंड इज वीमियो, VIMEO, वीमियो। ठीक है ना, वीमियो एंड टीचर्स ट्यूब। बोलिए, और बोलिए, और कुछ बोलिए आप। हाँ, तो ये जो मैंने जो आपको जो बात कही, टीचर्स ट्यूब एंड वीमे, या ये दो एप्लीकेशन है। तो ये जितनी भी बात कही, ये दिस वाज नॉट द एब्स्ट्रैक्ट लेक्चर ऑन टेक्नोलॉजी। ये लेक्चर ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक बात करनी थी, लेकिन इस लेक्चर में मुझे मेरे कुछ मुद्दे, मेरे अनुभव रखने थे मुझे। और जो मेरे मुद्दे और जो मैंने अनुभव इस ऐसे रखे कि मैं चाहता हूँ कि जो आप मुझे ये एप्लीकेशन के नाम पूछ रहे हैं, ये एप्लीकेशंस के मैं आपको इमेजेस देता हूँ, मैं इसको आप डाउनलोड करके, वर्कआउट करके क्लासरूम यूसेज में आप भी यूज करिए, बच्चों को भी दीजिए। जिसकी वजह से क्या होगा कि एक हम लोग एक टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्टिफाई कर पाएंगे हमारे टीचिंग को। और अगर हम अच्छे से जस्टिफाई कर पाते हैं तो हमको क्या होता है, मजा किस बात का आता है कि हम लोगों ने मल्टीमीडिया के थ्रू लेक्चर्स दिए, जो बच्चों को भी मजा आया, हमको भी मजा आया। क्योंकि जो हम लोग खाली वर्बली लेक्चर लेते हैं, ये पिछले 200 सालों से चल रहा है, लेकिन पिछले 5 साल के अंदर पूरे ट्रेंड चेंज हो गए। तो हमको जो पिछले 5 साल के जो अंदर ट्रेंड चेंज हुए, वो अगर सपोज हम कॉर्पोरेट नहीं करते हैं, वो अगर हम लोग परकोलेट नहीं करते हैं, वो अगर हम लोग सिनर्जाइज नहीं करते हैं, तो क्या होगा कि क्लास के अंदर बच्चों की संख्या कम हो जाएगी, और जो बच्चे जो है वो ये बोलेंगे, बोले ये चीज़ तो हम खुद भी कर सकते हैं। तो हमारा टीचर के तौर पे एक हमारा उत्तरदायित्व है, इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी एंजॉय, अवर स्टूडेंट एंजॉय। इट्स अ विन-विन पोजीशन, विन-विन पोजीशन। आपको भी मजा आया, बच्चों को भी मजा आया, आपका काम भी कम हुआ, बच्चों को ज्यादा आया। और दूसरी चीज है कि जो हमारी एक जो मान्यता है, जो हमारा एक थिंकिंग है कि टीचिंग सिर्फ क्लास के अंदर 1 घंटा बोलना, उसमें से बाहर निकलना है। हमको ऑडियोज, वीडियोज, टेक्स्ट, इमेजेस, रेजोल्यूशन, एनिमेशन और ग्राफ्स, ये सारी चीजों का हम लोगों को सिनर्जाइज करना, ब्लेंड करना। और ये ब्लेंड करोगे तो लास्ट चीज है शेयरिंग, कोलैबोरेशन, कनेक्टिविटी। जो वेब टू टेक्नोलॉजी है वो यही कहती है कि हम लोग जो क्लास के अंदर जो भविष्य में आते हुए लेक्चर में पढ़ाएंगे, उसका अभी से भेजना है, और जो आज पढ़ाया है उसको हमको शेयरिंग करना है, और जो हम लोग जितना भी मटेरियल शेयर कर रहे हैं उसको इंटरैक्टिव सेशन के अंदर हम लोग उसको तब्दील करें। और ये सारी चीज़ें होंगी तो हम लोगों को क्या है कि जो एक रियल एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड होगा, वो एजुकेशन स्टैंडर्ड हम लोग ऊपर ले जाएंगे। और ये जो स्टैंडर्ड है, इसके लिए हमारी टीम है बहुत अच्छे से तैयार कर रही है। बराबर है, हमारी मैडम हैं, हमारे जगदीश भाई हैं, जैसे मैंने कहा, हमारे ऋषि भाई हैं, हमारे चंद्रकांत भाई हैं। ये हमारी जो कोर टीम है, दे आर वर्किंग वेरी 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 इंटीग्रेटिंगली, एंड दे आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दैट एज। और इसी वजह से मुझे आज जो द अपॉर्चुनिटी मिली है, ये अपॉर्चुनिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे भी आपके साथ जो आज शेयर करने का जो मौका मिला, इसके लिए भी मैं इन लोगों का धन्यवाद हूँ, और मैं आपका भी धन्यवाद हूँ कि आपने मुझे सुना। लेकिन मैं उससे ज़्यादा धन्यवाद तब मानूंगा कि जो मैंने जो चीज़ें बताई, आप इसको इम्प्लीमेंट करें, तो इट विल बी आइसिंग ऑन द केक। ये सोने पे सुगंध होगा क्या।
it will be definitely icing on the cake. Thank you very much. Okay, so shall I sign off? Yeah, Rishi bhai, Chandrakant bhai, shall I sign off? યસ સર, આભાર વિધિ કરી શકાશે સાહેબ. Okay. એક્ઝિટ થઈ ગયા છે, આભાર વિધિ કરી શકાશે. Thank you very much, Damir sir. Your session is very informative and interesting, sir, and very useful to our participants. Friend, firstly, I would like to thank our Vice Chancellor, Dr. Himanshu Pandya, sir, and Registrar Dr. P.M. Patel, sir, for their constant support. I am equally thankful to today's speaker, Dr. Damir, sir, for his presence and sharing his knowledge, sir. I am also thankful to all the participants for choose our HRDC. I am equally thankful to our director Dr. Chatisbhai and my colleague Dr. Pritiben and entire team HRDC. Friend, thank you very much. Bye bye. Thank you.